everyone, welcome to my channel English with Wills and welcome to another video. So today we will be talking about future perfect tense. आज हम बात करेंगे future perfect tense के बारे में. Future perfect tense का मतलब कोई काम मुस्तकबिल में ख़त्म हो चुका होगा, मुस्तकबिल में पाए तकमील को पहुंच चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा. जैसे मजदूर एक बिल्डिंग बना रहे हैं और हम कहते हैं कि यार 2021 तक ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी. मेरा भाई मास्टर्स कर रहा है लेकिन अभी तक उसका मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ और मैं कहता हूँ कि 1 साल बाद मेरे भाई का या 6 महीने बाद मेरे भाई का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका होगा. तो कोई ऐसा अमल जो मुस्तकबिल के किसी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डिटेल के अंदर. Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to talk about future perfect tense. So let's start. We use it to talk about an action that will be completed in future. हम ये किसी ऐसे अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल में कंप्लीट हो चुका होगा, जो मुस्तकबिल में अपने पाए तकमील को पहुंच चुका होगा. इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस होती हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा. मिसाल के तौर पे आपके घर के बिल्कुल सामने कोई बिल्डिंग तामीर हो रही है, उस पर काम चल रहा है और आपको अंदाज़ा है कि 6 महीने के बाद ये बिल्डिंग तामीर हो चुकी होगी. तो फ्यूचर में आपको लगता है कि ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो यहाँ आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे. इसमें सब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं विल हैव या फिर शैल हैव. ज़्यादातर विल हैव इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव का इस्तेमाल बहुत कम होता है. So let's talk about the affirmative structure. In the affirmative structure, we use subject, will or shall, have, third form of the verb and object. For example, they will have built this building till next month. अगले महीने तक वो ये बिल्डिंग तामीर कर चुके होंगे. The train will have reached here at 2 p.m. 2 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी. The match will have started after 10 minutes. मैच 10 मिनट के बाद शुरू हो चुका होगा. Now let's talk about the negative structure. In the negative structure, subject, will or shall, not, plus have, plus third form of the verb, plus object. For example, they will not have built this building till next month. अगले महीने तक वो ये बिल्डिंग तामीर नहीं कर चुके होंगे. The train will not have reached here at 2 p.m. 2 बजे ट्रेन यहाँ नहीं पहुँच चुकी होगी. The match will not have started after 10 minutes. मैच 10 मिनट के बाद शुरू नहीं हो चुका होगा. Now let's talk about interrogative structure. सवालिया स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. In interrogative, shall or will at the beginning of the sentence. शुरू में shall या will लगाएंगे. Subject, have, verb की third form, object and question mark. For example, have they built this building till next month? क्या वो next month तक इस बिल्डिंग को तामीर कर चुके होंगे? Will the train have reached here at 2 p.m? क्या 2 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी होगी? Will the match have started after 10 minutes? क्या 10 मिनट के बाद मैच शुरू हो चुका होगा? Thank you. So hope you liked the video, and if you have any question regarding this tense, you can just write your comments there in the comment section and I'll get back to you. Thank you.